Next principle is principle of causa proxima. So according to this principle, the cause or reason for the loss must be related to the subject matter of the insurance contract. If loss is due to some other cause, then the insurer can deny to pay the compensation. What does it mean? We can understand it through an example. Suppose if a person has taken marine insurance, marine is related to sea. Later on we will discuss it in detail what is marine insurance. So a person has taken a marine insurance policy for sending the wheat bag, and on the way, if a rat spoiled the wheat, then no compensation will be given, because under marine insurance the cause of loss should be sea peril and not the rat. On the other hand, if the rat make a hole in the ship through which water enters and spoil the wheat bags, then compensation will be given because the loss of the wheat is due to sea water. In simple language, what we can say that the cause should be nearest or should be same for which insurance has been taken. जिस कॉज के लिए पर्पस के लिए इंश्योरेंस लिया गया है उसी के कारण लॉस होना चाहिए. यदि किसी अदर रीज़न से लॉस हो रहा है तो फिर उस लॉस को कॉम्पनसेट नहीं करेंगे. एग्जाम्पल मरीन इंश्योरेंस. वाई वी टेक मरीन इंश्योरेंस? बिकॉज if there is any trouble in the sea like tempest or other any problem, if loss is happening for the same reason, then only marine you will be paid by the insurance company. But as the example said, you were carrying the goods through sea and in the ship rats were there. ठीक है, शिप में चूहे थे और उन चूहों ने क्या करा, आपके पूरे वीट बैग को स्पॉइल कर दिया, उसको पूरा खा गए. तो क्या ये सी वाटर के कारण लॉस हुआ? नहीं. ये लॉस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रेट. So you cannot make any claim over the insurance company. Why you cannot make any claim over the insurance company? Because you have not taken the insurance for the damage due to rat. ठीक है. यदि सी वाटर आपके शिप में एंटर करता और उससे आपका पूरा वीट बैग स्पॉइल हो जाते, उस केस में आप क्लेम कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे चूहे खा गए, उस केस में आप लोग क्लेम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा. क्लियर? लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. मिटिगेशन मीन्स लेस, कम करना किसी भी चीज को. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ his property or subject matter of insurance in the same way as he would take care without taking the insurance policy. What does it mean? इसका मतलब है कि यदि आपने इंश्योरेंस ले लिया है तब भी आपको अपने गुड्स, अपने प्रोडक्ट का उतना ही केयर करना है जितना कि आप इंश्योरेंस लिए बिना करते. It is not like that if you have taken insurance then you will be careless. No, you will have to take care of all the things in good manner. The insured should not become careless for his property after taking insurance policy. It is duty of insured to make reasonable efforts and take all available precaution to save the insured property. ठीक है, यदि आपने कोई प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया है अगेंस्ट द फायर, देन आपको उतना ही ध्यान रखना है अपनी प्रॉपर्टी का जितना आप ध्यान कब रखते, जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हो. इन सिंपल वर्ड, यू कैन नॉट बी केयरलेस. एग्जाम्पल, if a person has taken insurance policy for his house, fire insurance policy for his house, and when fire breaks out
he should take all the measures to stop the fire and minimize the loss rather than watching the fire, because he will get compensation from insurance company. Suppose you have taken fire insurance, ठीक है, and suddenly fire breaks out, then what will happen? You will try to you will try all the efforts to distinguish that fire, उस फायर को बुझाने का आप पूरी तरह से एफर्ट्स करोगे। आप उसको केवल खड़े होकर स्टैंडिंग वे में देख नहीं सकते कि फायर लगी है, आग लगी है, और हमारा हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो कंपनी हमको इंश्योरेंस अमाउंट पे करेगी, इसलिए हम कोई भी हमारे एफर्ट्स नहीं करें उस लॉस को, उस फायर को बुझाने के लिए। ठीक है, आपको एफर्ट्स अपने करना पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन claim over the fire insurance company. Clear? Is there any doubt? So these all were some principles of insurance, most important topic in business services. If you have any doubt, then you can ask. Okay, thank you so much.